We are now starting with the very important questions. I have divided this into a couple of cases. Remember the cases. Any point of time you are stuck up in the practical question, jump back to the working note that I taught you. You will find each and every type in my working note example questions. After that, go back to the question, do the exact same what we have taught, what you have learned over here, and then afterwards solve the question. It will be very easy. You have to keep on practicing the working notes. Once you are well versed with the working notes, only then you will start the practical questions. Before that, do not attempt any question. It will be very confusing for you. So first, let's get over with the working notes first, and then afterwards we'll be doing the practical questions. चलो, आपके सामने ही I'll be making the questions and then solve the same. Question number one, I am doing working note number two. That's for income and expense related adjustments. Question number one for the second working note. Say you are given the exact amounts for receipts and payment account. Say for example, the amount is said to be 20,000 for the year 2019, 31st March 2019. They are telling you outstanding for the year, or say outstanding amount is 3,000 for the year 2018. They are telling you outstanding is 2,000 for the year 2019. Make sense? And I need not tell you that 2018 will be your very good, will be your previous year. Correct है? लास्ट ईयर का हो गया. एंड योर करंट ईयर, आपका जो करंट ईयर है वो 2019. वेरी गुड सर. तो ये जो 19 है आउटस्टैंडिंग, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एट द एंड. मेक सेंस? ओके. नेक्स्ट, you are having prepaid, say for example 1000 2018, that is again your last year. You are again having prepaid, say for example it is 1500 for 2019 or 2020, means you have received the amount for the next year, and for the next year amount it will be always a prepaid, because you are in which year? You are in the year 2019. Perfect. Correct. If it's an income, it's a liability. If it's an expense, sorry, yeah, it's an asset. It's an expense, so it's an asset. पक्का? ठीक है. Let's make the working note quickly. My working note is going to be static. If I am doing type 1 question, I am doing type 2 question, irrelevant. Your working note will remain exactly the same. You just keep on filling the amounts that you have been given. And after that, you will be getting the answer. Pakka? So you'll have to stick to the working notes. Can you do that? Wonderful. So a couple of questions, I'll be making the working notes with you. उसके बाद में will be just copying and pasting it. Solution. It's a very basic one. Do not expect this kind of question in the examination, but they might ask you in your working notes. Sorry, in your objectives. Yes. So the starting will be receipts and payment account, sir. Receipts and payment account. I told you to remember Lal, less, add, less. Very good. Then I taught you outstanding first, then prepaid. I taught you outstanding and then prepaid. And you will be getting the answer, that is your income and expenditure. Shortcut लिख रहा हूं मैं. First, the beginning, the previous year, the last year, whatever you want, you can write it away. I am writing beginning, and then ending. So you are not going to remember, or you are not going to like think in the examination that outstanding is added or subtracted. Just go to the working note. It will give you the answer. Correct? And you need to by heart this. I guess after a couple of questions you will be well versed with it. अभी भी तुम लोग आंसर दे ही पा रहे हो. ठीक है. Now this working note is applicable, sir. This working note is applicable for incomes also and expense also. Income also and
expense also. एंड किसको याद करने को बोला था मैंने? ALLA अल्लाह को याद करने का आपने को कोई कन्वर्जन नहीं चालू है राज सर, है ना? बहुत डर लगता है मुझे, ये जोक बोलने को बहुत डर लगता है सर। और अल्लाह अल्लाह दो बार अपन क्लास में बोल दिया ना बेटे तो बाहर से अपने को आवाज आएगा, सर क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, बट अपने को पास होना तो अपन क्या करेंगे? अल्लाह कितनी बार? दो बार। ALLA सो दिस इज असेट लायबिलिटी लायबिलिटी असेट असेट लायबिलिटी लायबिलिटी असेट। पक्का? इनकम के लिए ये वाला कॉलम है, एक्सपेंस के लिए ये वाला कॉलम है। चलो, नाउ वी जस्ट फिलिंग इन द अमाउंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट में सर कितना दिया मुझे? 20,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके लिखने वाला हूँ 20,000। सर बाद में मुझे क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग एंड द अमाउंट एंड दे आर टेलिंग मी द ईयर इज 2018। सो इज द 2018 ईयर द प्रीवियस ईयर? सो दैट विल बी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, है ना? आउटस्टैंडिंग है और वो बिगनिंग वाला, तो आई विल बी राइटिंग द अमाउंट ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी 3,000। सर वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको। मैंने ब्रैकेट में कभी भी अमाउंट डाला है तो वो नेगेटिव है, मुझे माइनस करना है। मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूँ, मुझे प्लस करना है। कैन यू रिमेंबर दैट? ओके, मेरे पास में नेक्स्ट उसने क्या बोला? आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज एंड दैट इज फॉर 2019। ये वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग। ये भी आउटस्टैंडिंग है बट बिगनिंग, तो ये वाला नहीं चाहिए। ये भी आउटस्टैंडिंग, ये वाला एंडिंग, यस मुझे ये वाला चाहिए। तो मैं अमाउंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी, पक्का सर? परफेक्ट। प्रीपेड सर क्या बोले? प्रीपेड 1018। तो कह रहे सर ये मेरा प्रीपेड एट द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर का है, तो मुझे प्रीपेड ढूंढना पड़ेगा। ये रहा प्रीपेड और ये लास्ट ईयर है, बिगिनिंग है, प्रीवियस ईयर है। तो मुझे अमाउंट का लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड द अमाउंट इज 1000। तो यहाँ पे 1000 लिख दूंगा मैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड द लास्ट वन एक ही बचा है मेरे पास में, बट एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। प्रीपेड है 20 है, ये नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट ईयर का मतलब कि मेरा एंडिंग हो जाएगा 1500, तो मुझे ये वाला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट। सो द अमाउंट विल बी 1500 सब्ट्रैक्ट करना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, मतलब 2019 के अंदर आपने अगले साल का रिसीव किया, आप यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 2019 बोले या फिर 20 बोले, कभी 21 बोल दे। कभी कभी कुछ लोग दो साल का पहले ही एडवांस में पे कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 2-3 साल तक आना नहीं, पैसा ले लो, खत्म करो। मेक सेंस? चलो, सो इट कैन बी एनीथिंग। सर टोटल करते हैं हम लोग। मुझे माइनस करना है 4,500 और मुझे प्लस करना है 3,000। तो कहना इसे मुझे 1,500 माइनस करना है। सो 20,000 माइनस 1,500 इट इज 18,000। मैडम मैथमेटिक्स है ये, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 20, लुक एट दिस, 20 माइनस 3 इज इट 17,000 प्लस 1 इज इट 18,000 प्लस 2 इज इट 20,000 minus 1,500 is 18,500 which is exactly the same. Any which way that you like you can do it. ये खाली कैलकुलेशन है, आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। दिस इज माई केस 1, दिस इज माई क्वेश्चन 1 of the working note related to income and expenses. Are we very clear with this? Too good. Coming to the next question.